Ball is already decided. Opening pair for the R7 Tigers. So the opening pair, Sushant and Harish. For the R7 Tigers. And 20 Warriors, their second chance. Let's see if they can grab this chance and go into the finals of the HCL Harmal Cricket League 2020-2021 now. It's a new year, new start for all the cricketing fans, all the cricket lovers. Harmal Cricket League organized by Patwadi Mitra Mandal. This is their third season. And every year it's getting grand and grand and grand. The entertainment, the excitement, everything is grand here on this side, Patwadi ground. Yes, we are ready. Bowler is the highest wicket taker till now. Deepak with the 7 wickets. He will start with from the road end, and Sushant. He is a good batsman, but he didn't click that as much he wanted. Sushant Thakur and Harish Wangankar on the non-strike end, the big muscular power. So here we go. The official says, let's play. Start of the second qualifier. Let's play. First delivery played nice, wanted to play it, but missed it. Change of a keeper this time for 21 Warriors. They have already knows the importance of the keeper, of every fielder. Every fielder is important. Saying in the cricket, catches win the matches, your fielding win the matches for you. You have to give 100% in every department. Second delivery, this time it's in the gap. They might try for 2. The ball was into the gap, so they got this too easily. They started the account of himself, Sushant, and of the team. R7 wants to score big runs because target should be something 85 to 90 runs. We have already seen Saidaksh scoring 112 runs, the highest target of the HCL Season 3. We had a lowest also yesterday. Omskar is only 35 runs. So we have seen so many things on this ground until now. It's a lovely ground. Always a pleasure to be on this ground, watching the cricket. Played nicely along with the carpet. Sachin wanted to go for the run out, but there wasn't any chance. I think Deepak is struggling with some cramps over there. He's struggling in his follow-throughs. Now the big muscular, the pollard kind of a batsman, Mr. Harish Wangankar on strike. If he hits big. He has that power, he got that power. Short one. It's the same area which Akhil was pointing towards, and he played there only. So with the single, the score is moving slowly and steadily. 4 on the scoreboard. We'll be getting some VIPs for the final in the evening time.
Sushant Sam, it's a mid-wicket region and a first boundary. So with this boundary, 8 runs. He's not in his good form, but at the important time, he might want to get his form. The captain of the R7. R7 Tigers. Eight on the scoreboard. Over the point region, what a lovely shot this is. Ball is going racing, but it's a good feeling from the youngster. Saved one, no, saved 2 runs. There was a chance of a third. Youngster, the Abhay Naik, under 22 Abhay Thakur, sorry. Emerging player for the 21 Warriors and for the Harman Cricket. Big one, this is what I was talking about, Harish. It's a big one. First sixer for the R7 Tigers inning. With the 6 score is 16. He's a good bowler, Abhay, but he's doing some mistakes. He will run. Slower kind of a delivery, and there's a fielder, Sachin is there. There was a chance for some boundary or a sixer, but Harish must be upset with himself. Could not hit that ball as much as he wanted to be. There wasn't any timing. He's a youngster, he will learn slowly, but he'll be a good future. It's a wide one, I guess so. Not a wide one, it's a leg cutter kind of a delivery. Good delivery, very good delivery. Just deceiving the batsman there. Batsman thought the ball is going down the leg side, but ball just came back in. It was a leg cutter. So dot delivery after some time. 17 is the total on the scoreboard. Good cricket is going on. Bowling batsman and fielding, and a big shot there. There's no field around there. Ball will race away. For sure. Again the short delivery. Now, you can't afford to bowl the short ones. You need to bowl the fuller ones, or you need to vary your space there. It's easy pickings for both these batsmen. Sushant is getting in his groove. 2 boundaries he scored till now. Harish with 1 big 6 and a good partnership going on. 21. Partnership is very important. Short delivery. This is, you have to bowl this line and length. Learn slowly and steadily. You are still young. Abhay, you will learn and you will be a good bowler in the future. Again a short one.
Short one and a boundary again with from the bat of Sushant. Very easy pickings for the batsman. In this boundary score is 25 for the loss of no wickets. Good partnership, 25 between these two. New bowler Kanhaiya Naik. We had overseas players here. Yesterday we have seen Raju Dabholkar, Gurwaruskar, Ram Nagbekar. We had good bowlers also, experienced one. So this boy, Abhay Thakur, will learn something from them. You need to get some experience from those experienced players. And Harish on strike, the big man. He stays leg side. Must be only a single. 85 to 90 is the target, which I always talk about on this ground, because this ground is a big one. Big boundaries, very big boundaries. Hard to clear sometimes. But the players like Nitesh Gadekar, Ram Nagbekar, they clear this easily. Short one again, same shot. He loves this shot very well. And he hits it very well. Again, they might try for two. They might try for third one. Chance of a run out on the striker end. Harish is the culprit for that one short run. It was a good shot from Sushant. Again, a stylish shot, stylish batsman. He already hit 3 boundaries. 2 runs with it, 2. Score is 28. Third over in progress. Shot, what a shot, and a second sixer. No, straight in the hands of the fielder there. Pavan Kuda is doing some good fielding there, even at the 28 runs partnership broken by Kanhaiya Naik, and a good catch from the Pavan Kuda. So after departure of Sagar, it goes the man Ram Nagbekar. 100 runs in the tournament till now. First time he scored 48, then 52. And he is there and he wants to continue with the same form for his team. R7 Tiger. Very important player. Very, very important player. Sushant on strike. Single. Only a single. So now Ram on strike. The big match player. As I said, he wants to continue with his last form. Yesterday's form. Every day is a new day for you. You need to continue with the same form. Rama will try for 2 for sure. It's in the gap, yes. Good running between the wickets. He is very quick.
He is very quick between the wickets. Just like Sachin Tendulkar, he runs between the wicket. He used to run between the wicket. Rama is doing the same thing. He's a pocket rocket. We have seen his form. He is hitting already in this cricket league. Shot, a good shot. It will be only a single. Sushan wants a second, but there was a second. Good throw, good feeling from the youngster Abhay Thakur. So after completion of 3 overs, score moves to 32 for a loss of 1 wicket. বাইরে ভিতর আসবে ये रे বাইরে রে अशोक त्यांना किती आणली मध्ये नाव पण किती विकत नाही for Sushant. New bowler will be The new bowler will be Anay Harbalkar. Fourth over, he will bowl from the road end. Anay. Thank you. In the meanwhile, Friends 11 Herbal organizing their 6-over limited Panchayat tournament at the Bhaidwada ground on 22nd, 23rd and 24th of Jan 2021. Group A will be Pernem, all the Pernem teams. Group B will be all the teams from outside the Pernem and Sindhudurg. 50,000 is the first prize with the trophies, 25,000 is the second, and same losers will get the 5,000. So take the note, all the teams. Ram will face Anay. It's a Panchayat tournament. Good shot, square cut. I think they are going for the second. Yes, they are going for the second. It took already 4 good catches there at the mid-wicket region. So he's a contender for the best fielder. One more we have Gajanan Parab. He is fielding on the cover region. The youngster. This time it's a good shot. The flick and the sixer from the bat of the pocket rocket Ram Nagvekar. With this 6, score is moving to 40. 4th over in progress. So 10 runs per over till now they are going. This is the 4th over in progress. The good start was needed. It was given by the Sagar and Sushant, and Rama is continuing with that good start. Good partnership of 28 runs between Sushant and Sagar. It was for R7 Tigers. 21 Warriors trying very hard to be into that final because they are the champions of the last season. Played nicely, played very delicately. Good call. Free spin from the Sachin there. I think the ball is him and he's just missing those balls today. He need to concentrate on this. On his fielding there. He's a good fielder. Good batsman for 21 Warriors. He's a local boy, local guy. 42 and high in the air, fielder, same fielder under it. And he took it this time. This time he took it comfortably. The important wicket, the main man goes, Ram Nagvekar departs. And it's a big man, big wicket, just scored 13 runs. So could not able to catch on this form Ram. But he will have something to tell the Sushant.
he goes on the score of 13 with only a 6 and some 2s and singles. Total tally is 42. खूप जण कनेक्ट झाले तरी केशव नाईक केशव वायनांचं We have a lovely sound here, DJ Savvy. With the Goa Sports Culture, YouTube Live. केशव नाईक Keshav Naik, the new batsman on non-strike end. Sushant on striker. Full toss. It was a full toss. He could have hit that anywhere. They're going for second. Chance of a run out on the non-striker end, but he is saved there. Good running. He was injured for last 2-3 years. So Kaka Keshav, but he's still playing. This is the love for the cricket. You need to come back well. Thank you for the refreshment. Bhatwadi Mitra Mandals. They are taking good care of everyone, the commentator, the scorer, and every volunteer here. Thank you very much for this love, for this care from the Bhatwadi Mitra Mandal. With the refreshment of the Hell Energy Drink Classic, we need some energy. Both are in progress. Short one, Sushant wanted to hit that, but straight into the hands of a leg gully. So competition of 4 overs. Score is 44. Over to you, Ashok Naik sir. Thank you. थैंक यू ट्यूजडे, धन्यवाद गजेंद्र। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक बड़ा विकेट राम नागवेकर वापस स्ट्राइक एंड पर काका के नाम से जाने जाने वाले बड़े शॉट के लिए बल्लेबाज केशव उर्फ काका कन्हैया गेंदबाजी करते। इस बार खेलना चाहते हैं कि कवर पर बाहरी किनारा लगा, गेंद निकले पॉइंट पर, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। 5वां ओवर और टोटल स्कोर 45 रन 2 विकेट पर। मुकाबला मैदान पर R7 टाइगर्स और उन्हीं के साथ 21 वॉरियर्स। अच्छा क्रिकेट हल्के से खेला गया, इनको ऑफसाइड पर जैसे देखा, पॉइंट पर फील्डर है, कवर पर फील्डर है, काफी दूर है फील्डर। 1 रन बड़े आराम के साथ पूरा किया। थोड़ा सा प्रेशर दबाव आ चुका है राम नागवेकर के आउट होने के बाद। एक सूझबूझ की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। अब स्कोर पहुंचा 46 रन पर 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर पेज गेंद, एक लेफ्ट शॉट, गेंद हवा में, लंगन बाउंड्री पर, गेंद डीप लंगन सीमा रेखा पर। काका साला बहुत ही अच्छा शॉट इस बार। 52 टोटल केशव उर्फ काका। शॉट गेंद, छोटे गेंद, फुल गेंद, इस बार खूब शॉट के साथ डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। पिछले 2 साल पहले थोड़ा सा पैरों में निश्चित रूप से बड़ी जो की चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद जो कि क्रिकेट का प्यार है इस खिलाड़ी के साथ, और फिर से जो कि क्रिकेट के मैदान पर 2 बड़े शॉट, 13 पर अपने व्यक्तिगत, और स्कोर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 58 रन पर पहुंचा। थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए कन्हैया अपने इस ओवर में एक बार फिर से अपने बॉलिंग बात पर राइट आर्म राउंड विकेट
और नॉन स्ट्राइकर इन पर उन्हीं के साथ बल्लेबाजी करते हुए जो कि सुशांत। ओवर पिच गेंद ऑप्शन से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। पहला अतिरिक्त रन जो कि स्कोर के खाते में, तो दाद देने पड़ेंगे 21 वारियर्स क्रिकेट टीम को। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पहला अतिरिक्त रन 5वें ओवर में। अच्छी गेंद और फुल टॉस और अपने फॉलो में सामने गेंद को हाथों में लपेटा और एक कामयाबी मिलती हुई इसी के साथ यहाँ पर जो कि फुल टॉस जो कि गेंद थी, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से बल्ला जो कि पहला घूम गए हाथों में। खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, सामने जो कि खेल बैठे और कन्हैया ने कैच को लपेटते हुए विकेट नंबर 3 वापस। एनर्जी ड्रिंक आणि एक श्याम ठाकूर श्याम ठाकूर आणि एक 17 और एक नए बल्लेबाज मैदान पर श्याम ठाकुर बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सामने उनके जो कि उनका साथ देते हुए शुरू में ओपनिंग की शुरुआत की थी वो सुशांत ठाकुर, और सफलता हासिल करते हुए मैदान पर कन्हैया अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट अराउंड विकेट। अच्छी गेंद, कोई खास समझ नहीं पाए, जोरदार अपील अंपायर की ओर देखते हुए, तो इस गेंद स्टंपों को मिस कर रही थी में मिला और खेल समाप्त होता हुआ इसके साथ 5वें ओवर का 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 59, 59 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का इशारा अंपायर का, जो कि बैट्समैन चॉइस पावर प्ले, बैटिंग चॉइस पावर प्ले, और बॉलिंग बात पर दिखाई देते हुए पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए दीपक वांगड़कर। सामने बल्लेबाज है सुशांत ठाकुर, नॉन स्ट्राइकर इन पर है श्याम ठाकुर। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6ठा ओवर जो पावर प्ले का ओवर, और अपने बॉलिंग बात पर गेंदबाजी करने के लिए दीपक वांगड़कर। 2 ओवर कोई मेडल में 22 रन 2 विकेट कन्हैया की गेंदबाजी का विश्लेषण, और 2 बल्लेबाज 13 रन पर अपने व्यक्तिगत आउट हो चुके हैं। अच्छी गेंद इस बार हल्के से खेला, गेंद को ऑफसाइड पर थ्रो किया, देखना होगा बिल्कुल करीबी मामला। बहुत ही एक ही एक्शन में गेंद को उठाया, उसी एक्शन में गेंद को थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, और लगभग करीबी मामला था। बढ़िया फील्डिंग, सीधा लगती गेंद स्टंपों पे तो बल्लेबाज को लगभग वापस आना पड़ता श्याम ठाकुर को। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में, 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 60 पर 3 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक एंड पर श्याम ठाकुर, नॉन स्ट्राइकर इन पर सुशांत ठाकुर। ये जोड़ी मैदान पर पावर प्ले का ओवर, और दीपक वांगड़कर राइट आर्म ओवर द विकेट। थोड़ा सा फील्डिंग में अपना बदलाव करते हुए अपनी बॉलिंग बात पर आराम के साथ खेला, गेंद को घूमकर मारा फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, गेंद डीप फाइन लेग से मारे। जंगली टूर्नामेंट के साथ बॉल बॉयज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये छोटे बच्चे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स में से। तो एक बड़ा शॉट लगा बल्लेबाजी में, और
एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर दीपक वाइगंकर अगली गेंद लेकर सामने बल्लेबाज है श्याम ठाकुर, उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर, एक स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। छोटे गेंद इस बार पुल का गेंद को अब ऑन साइड पर गैप में गेंद निकलती हुई पहले 70 फोर नहीं बाउंड्री है ये 70। इतना जल्दी से शब्द शरीर में जमता बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, आते आते 2 बड़े शॉट, एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, 10 पर अपने व्यक्तिगत और टीम का टोटल स्कोर 70 रन 3 विकेट पर। ओवर पेज गए इस बार लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ और गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। जो कि मैदान पर दिखाई देते हुए और पूरा टाइमिंग बढ़िया कर रहे, ताकत लगा रहे गेंद के ऊपर और लगातार आक्रामक बल्लेबाजी मैदान पर दिखाई देते हुए स्कोर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। R7 टाइगर्स क्रिकेट टीम मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए 76 लॉस ऑफ 3 विकेट। अजून 14 बॉल थोड़े से महंगे निश्चित रूप से इस ओवर में दिखाई देते हुए दीपक वाइगंकर 2 छक्के 1 चौका अब तक पावर प्ले में और सामने बल्लेबाज श्याम ठाकुर। अच्छी गेंद इस बार हल्के से खेला गेंद को देखना होगा, पहला रन तेजी के साथ मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर दूसरे के लिए निकले और जब तक थ्रो पहुंचता बैकअप कर रहे थे गजानन। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन मिलते हुए स्कोर में 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78 रन। 2 बल्लेबाज लगातार 13 पर, राम नागवेकर 13 रन बनाकर और केशव 2 छक्के लगाकर 13 पर। शानदार शुरुआत सुशांत ठाकुर एक और से ओपनिंग बल्लेबाजी में आ चुके हैं, वो मैदान पर अपने टीम को एक अच्छे मोड पर जो कि लेकर चल रहे हैं मैदान पर। मारे का पर कोई फील्डर नहीं, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को वाइगंकर का 2 छक्के लगे 2 चौके लगे इस ओवर में और टोटल स्कोर पड़ता हुआ जो कि 4 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर 82। खेल समाप्त होता हुआ 6 ओवर का और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 82। 22 रन सुशांत 22 अरे और 23 बॉलर 13 बॉलर 22 धनंजय 13 गेंदों में 22 रन पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए सुशांत ठाकुर और उन्हीं के साथ 2 चौके 2 छक्के लगाते हुए जो कि वो भी बल्लेबाज जो कि 22 रन पर अपने बल्लेबाजी करते हुए। श्याम ठाकुर गेंदबाजी के मोर्चे पर 7वां ओवर और धनंजय वस्त गेंदबाजी करने के लिए आइकॉन खिलाड़ी इस टीम के धनंजय वस्त अपने बॉलिंग मार्ग पर ओवर 7वां। पिछला मैच बड़ा टोटल 113 का टारगेट सामने। छोटी गेंद इस बार पुल किया गेंद को और डीप स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई। सिंगल डबल के साथ शुरुआत की सुशांत ठाकुर ने, अब मात्र आक्रामक बल्लेबाजी। पहला बड़ा शॉट उनके बल्ले से दिखाई देता हुआ 6 रन के लिए 28 रन पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके 1 छक्का अब तक लगाते हुए। लेकिन सिंगल डबल के साथ ये बल्लेबाजी इस विकेट पर 8 ओवर के अगर मैच हो तो ये बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी और उसका बिल्कुल नमूना पेश करते हुए सुशांत ठाकुर स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए धनंजय की गेंदबाजी का। सातवां ओवर, अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग करनी पड़ेगी मैच में 21 वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। हल्के से गेंद को पुश किया, बढ़िया क्रिकेट, एक बड़े शॉट के साथ सिंगल को अपने आप को सामने वाले बल्लेबाज को मौका दिया ज्यादा बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि मालूम है सामने से श्याम ठाकुर भी आकर 2 छक्के अब तक लगा चुके हैं, 2 छक्के 2 चौके लगा चुके हैं
और वो भी उनमें भी जो कि काबिलियत है, जो कि बड़े शॉट के लिए उनको ज्यादा मौका दे रहे हैं। अपने बॉलिंग बात पर धनंजय वस्त राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, वो चलन के कारपेट के साथ खेला, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर और सुंदर फील्डिंग, अच्छा थ्रो सचिन नाइक जो कि मिड विकेट पर और गेंद को सीधा सफाई के साथ फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। एक रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में 89 पर पहुंचा 3 विकेट पर 89 लॉस ऑफ 3 विकेट 90 पर पहुंचा, माफ कीजिए टोटल 90 रन 3 विकेट पर। सीधा कवर पर गजानन परब के हाथों में गेंद चली गई और इस मैच में ये दूसरा तालियों से स्वागत। बल्लेबाजी में 29 रन बनाए, 29 रनों में 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, लेकिन गजानन परब की भी जो कि प्रशंसा करनी पड़ेगी। अब तक कैच पकड़े हैं टोटल इस 3, 1 रन आउट का विकेट, तो दावेदार बन सकते हैं बेस्ट फील्डर के लिए जो कि इस टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ी काफी देखने को मिले, अनुभवी खिलाड़ी, और वो उनमें से गजानन परब का नाम तो लेना पड़ेगा। नए बल्लेबाज मैदान पर संतोष नार्वेकर नए बल्लेबाज। टॉस गेंद आते आते बाहरी किनारा, गेंद निकले कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, थोड़ा सा एक बाउंस मिला गेंद पर, लेकिन चौकर नहीं थे फील्डर। गेंद को फील्ड करते जब तक थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ से टोटल स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 92 92 रन 4 विकेट पर। ओवर मैच का चलता हुआ 7वां ओवर। पिछले मैच में टोटल था 113 का टारगेट सामने। लेग स्टंप से बाहर गेंद, इस बार लेग स्टंप से दूर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिल गया स्कोर में। 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 93 93 रन 4 विकेट पर 93 रन। 21 वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने टॉस जीता फील्डिंग करते हुए और बल्लेबाजी करते हुए। R7 टाइगर्स क्रिकेट टीम शॉर्ट पिच बाउंसर, इस बार गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। खेल समाप्त होता हुआ 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 93 लॉस ऑफ 4 विकेट, लास्ट ओवर टू गो। आखिरी ओवर का खेल बाकी और बॉलिंग बात पर अभय नाइक जो कि गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी ओवर का खेल 6 गेंदों का बाकी, एक अच्छा टोटल 93 लॉस ऑफ 4 विकेट। सफल हुए थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक गली पर फील्डर, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप लॉन्ग ऑन पर और एक डीप स्क्वायर लेग पर और एक शॉर्ट फाइन लेग पर। अड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर और जब तक देखना होगा मिड विकेट पर फील्डिंग और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन के तरफ। चार रन के साथ से स्कोर 97 रन 4 विकेट पर। ओवर पेज गया है, लेफ्ट शॉट सीधा लॉन्ग बाउंड्री पर, बहुत अच्छी फील्डिंग धनंजय वस्तला।
जो कि पांचवा 27 रन बनाए, जो कि बल्लेबाज एक शानदार बल्लेबाजी, 2 छक्के और 3 चौके लगाते हुए अपने इनिंग में 10 गेंदों का सामना किया और खुद के व्यक्तिगत जो कि श्याम ठाकुर आउट होकर वापस 27 रन पर और टीम का टोटल स्कोर 97, 5 विकेट पर। नए बल्लेबाज मैदान पर रोहित साकेरकर। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, स्लोअर वन चकमा दिया इस बार बल्लेबाज को। डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अभय गेंदबाजी करते हुए एक अच्छा टोटल देखना होगा, एक दूसरा बड़ा शॉट जो कि इस आखिरी ओवर में। फुल टॉस गेंद बिल्कुल आपके इस बार ऑन साइड पर और गेंद चली गई लंबा और मिड विकेट। 100 रन पूरे होते हुए R7 टाइगर्स क्रिकेट टीम के 100 रन पूरे होते हुए 101 रन टोटल, 5 विकेट पर। तो फिर से बड़ा स्कोर सामने 21 वॉरियर्स क्रिकेट टीम के सामने चेस करने के लिए 8 ओवर में। कट्टे को तो खूब करने के साथ सही नजाकत जो कि तकनीक के साथ इस बार गेंद को क्रीड़ा पॉइंट और कवर का है 105 रन, टारगेट रखा है 106 का। 13 रन पर राम नागवेकर, केशव उर्फ काका आउट हुए 13 रन बनाकर। श्याम ठाकुर ने बनाए 27 रन और 2 चौके के साथ 10 पर जो कि संतोष नार्वेकर जो कि बल्लेबाज काफी महंगे साबित हुए 1 ओवर में, जो कि पावर प्ले के ओवर में दीपक मांगेडकर ने दिए 23 रन और यह था बिल्कुल लेखा जोखा। सामने 106 रन का टारगेट 21 वॉरियर्स क्रिकेट टीम के सामने। और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं। आइए आगे का हाल सुनाते हुए अक्षय महाले के साथ। बॉक्स में से स्वागत करेंगे हमारे और एक जो कि डीजे और मंडप डेकोरेटर्स दिलीप अजन का स्वागत। बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग गजानन पर इस मैच में और दिलीप आपका भी स्वागत। Yes, sir. Thank you, DJ. Once again, welcome back into this Hermal Cricket League Season 3, a match between R7 Tigers and 21 Warriors. It is a situation where if you want to move to the grand finale, you have to win. If you're not, you're out. This is the statement going on. The first inning summary, if we generally see 105 runs was well set up with the courtesy of Sushant Thakur. A brilliant paced up inning from him, 29 runs of the individual score. It came out as an opener. And the way he paced his inning, that was really important. Because at one end, we were already observing that wickets were falling. And he paced his inning. And Sushant Thakur gave a good contribution of 27 runs with the courtesy of 2 gigantic sixes and 3 fours.
of 27 runs and well supported by Santosh as well as Kaka and Ram Nagvikar. So good match has been on, the competition has been on. We have already one team reaching into the grand finale, that is Sai Daksh, in the courtesy of Nitish Gadekar, the man of the match in the previous match that was been held. Let us see the big question mark there. Who is going to qualify into the grand finale? Either they are 21 Warriors or R7 Tigers. The answer will be coming to this question in coming 8 overs. The question has been demanding that 8 overs are been coming towards you and runs you have to collapse are 106. 106 runs are being required in the coming 8 overs. Is the situation right there? With respect to the 3 power play, first was power play mandatory in which 2 fielders will be allowed outside a 30-yard circle. This is the equation for the batsman. They will be always eyeing to get extra advantage of scoring runs. Once again, welcome to all the viewers who are watching the match live on YouTube through the medium of Goa Sports Culture. Doing a favorable job, Vijit Kirkar on the cameraman, and on our electronic scorecard we can see Rajat Kinlekar doing a favorable job. Yes, a lot of YouTube broadcasting channels have been coming up, and it is good news for all the Goan cricket lovers. Going back to the field, what can we see? 106 is the target that has been required. On screen, we can see a great pace arm bowler, that is Harish Maingankar, commonly known as Sagar, will be starting the bowling department. In the batting, we can see 2 openers out there in the middle. Said to be a good name. Dhananjay was onto the main striker's end and onto the non-striker's end, Kanaya Naik. The signal is coming from the umpire. He says that he's been ready. Abhijit Tadikar along with Sujit Rani. So here we go for the second inning. 106 runs are being required. 2 fielders allowed outside a 30-yard circle. For a right-handed batsman, we can see a deeper mid-wicket followed by the long off also covering the deeper extra cover. These are the 2 fielders. First ball of the second inning. The chase has been on, the race has been on, the hit has been on onto the Sai Batwadi ground in HCL Season 3. First bowler down the leg aside, just a delicate touch. As soon as the fielder there is a Praveen Thakur comes all the way from the shortest square leg zone, collects the ball out. The first run has been started off the account opener here. This is for 21 Warriors. 106 is the big achievement that has been required. A big mountain can be seen in front of the 21 Warriors. And yes, I was speaking about the first match. It always creates an extra cushion when the targets of hundreds, above the hundreds are been set up. But nothing to be said of in the format of cricket. Nothing can be predicted. Cricket is a history of making and breaking record. Here we go as Sagar continues. एक गेम करना, एक गेम ध्यान नहीं थे. This time a delicate touch on the front foot, a straight back shot can be seen into the hands of that mid-off fielder. Sham can be seen aggressively coming onto the ball, but he will not be managing to stop the single. The single has been on for 21 Warriors. A lot of support can be seen for both the teams, that is 21 Warriors as well as R7 Tigers. So let us see who is going to make up their name in the grand finale. Either they are R7 or either they are 21 Warriors. Fielders inside a 30-yard circle, if you generally see, behind the wicketkeeper we are having a flyer slipper, a cover point, the extra cover, the cover. The mid-on, the square leg, and 2 fielders outside a 30-yard circle are deeper mid-wicket as well as the long off fielder. Beautiful shot along the carpet, just reminded me of the leather drive. The ball has been thrown straight into the hands of that long off fielder. Kuman Thirekar can be seen on the screen. Little bit of fumble, and because of that fumble, another single. That means a couple of runs have been definitely added from the bat of Dhananjay was. With this 2, the score has been now moving to 4 runs on the card, chasing a target of 106 runs. It is said that in any format of sport, hard work has no option. If hard work has been better, then success has no option. That is what hard work has been directly related to success. So let us see, can Dhananjay make the hard work or can the bowler show the hard work? Cross-banded shot, the ball has been going down, deeper square leg, the ball has been winning the race into the deeper square leg, and that's for the first rolling boundary.
Yes, thank you, DJ. A beautiful sound from DJ Savvy. Another 4 runs have been added on the tally with that 8 runs can be seen on the card. Did a bit of full line delivery, a cross-padded shot, taking on a half a volley, and the result was a 4. Shot of land, and the punishment, shot arm action, that is full shot comes on the business, and that's been Ayub. Yes, thank you, DJ. 6 more runs will be definitely added with that 6. Definitely, the target has been now looking easy. 14 runs can be seen on the card. I will always say that not a good delivery for the bowler to be bowled off. Bowlers should always stick to your basic. Basic for a bowler is bowl onto the good length. Blower some slow kind of delivery. Bowl on Yorker line deliveries. These are the things that you will definitely get reward of. Slightly changing the line and length, you're getting the punishment. Beautiful shot from the bat of Dhananjay, and he's getting the confidence with these 2 good shots. One was a boundary and a 6. Score has been moving to 14. बरो गैंग दो धने बरो गैंग दो This time down the upper side on the back foot, just wanted to play that late cut, missing it completely. The pace on the ball was slightly higher than the shot was been offered out. The ball has been rolled back into the hands of the wicketkeeper Ram Nagwekar. The first over, if you generally see the summary, first was a single, another single, couple of runs, 4 and 6. That means 14 runs have been produced without any loss of a wicket. 14 without any loss of a wicket. Team batting 21 Warriors, chasing a target of 106 TG. So here we go on the bowling department. We'll be bowling the second over. I think Ram Nagwekar will be coming on. One of the greatest names. It is said to be into the history of Goa tennis cricket. It has been known as a lot of experience behind this man. But I always say experience is one of the best teachers. Let us see what kind of display of bowling will Ram show. And if you generally see the summary for Ram Nagwekar, Mandarin Champions Trophy that was been held in 2019, man of the series. The winner of a Jupiter bike with respect to 187 runs, 4 wickets and 7 catches for Ram Nagwekar. Here we go, Ram Nagwekar, one of the greatest players in the action, bowling on number 2. Shot of lane, backward striker, what a shot from the bat of Kanai. The ball has been racing down into the deeper court zones, and it's been an point. Another 4 runs adds on a tally, and Akhil has been telling me 18 runs can be seen on the card. Beautiful shot, Ashok sir, if you generally see on the back foot, a square cut can be seen. The ball has been racing down into the deeper cover fences for a 4. This time, just sensible cricket, I will say. Little bit of fumble, the ball in the wrist down into the hands of the extra cover field. A sensible work, he is knowing the factor that I am already getting the runs that are been required in the over. So it is not need of taking any extra risks. Seagull has been taken, strike has been changed, the Dhananjay was can be seen. Single takes the entire tally to 19 runs, 1-9. Delicate down the offers, slightly bit of fumble once again from the Mayuris, and this was a little bit paced up delivery from the hand of Ram Nagwekar. Another single jot downs on the tally with that single. The score has been now moved to 20 runs. A beautiful organization, Hanuman Cricket League Season 3. This is turning out to be, the heat has been on, the race is on. Let us see who is going to make up into the grand finale. Ram Nagwekar continues with respect to the second over. Shot of lane, a backward square card. Oh boy, what have you done? Down the cover point zone. The catch has been dropped out. And it is always said that if you want to win matches, you have to take catches. The catch was been dropped off Ganaya. How much this catch is going to be proved out to be for the bowling, and let us find out. That is the team bowling is R7 Tigers. Ganaya will be thinking that one lifeline has been already given to me. Patel gets down the offside, a submarine kind of delivery. Ball has been rolling down into the hands of Prasad. Single has been taken up with a single. The score has been now moving to 21 runs on the card. Yes, Kanaya will be thinking that yes, the lifeline has been already given to me. I should make a goal out of this lifeline. The big match has been set up in front of me. A lot of local spectators of 21 Warriors are giving and support towards me. This will be the mindset going on with Kanaya. Dhananjay was on screen now. Down the upper side, a submarine kind of delivery that we commentators usually talk about. Dhananjay was expecting the ball to come to a certain height, but the ball didn't bounce up. The result was the dot delivery. Second over from the hand of Ram Nagwekar coming out to be very brilliant. 7 runs have been given in this second over. The entire tally after the completion of 2 overs is reached to 21 without any loss of a wicket. 21 without any loss of a wicket.
gang sare ke kona kam 21 runs can be seen. A beautiful sound from DJ Sebi. Two commentators out there with me, Ashok Sarnaik all the way from Shiroda, and another good voice of English, Mr. Kachendra. It's always a big question mark that many people ask about a cricketing bat. Law number 5 says that a cricketing bat should not be more than 38 inches in length. It should not be more than 4.25 in width. It should not be thicker at the edges, that is more than 2.64, and at the end, that is edge, it should not be thicker than 1.56 inches. These are the situation, and a cricketing bat should be made of wood. That are the circumstances. Moving back to the field, over number 3 can be seen in the action, and let us see who is going to bowl. Captain of R7 Tigers, I think so. Sushant is going to bowl the over number 3. So Sushant continues with respect to the third over. 21 runs on the card without any loss of wicket. 21 number for 21 Warriors. Lot of strong breeze can be seen now blowing, and it is left. If you generally have a shot into the long on or maybe into the long off, the ball will naturally go with the flow of the wind. Beautiful delivery, a slow kind of delivery right into the block hole. It is said to be the weapon from the bowler, removed from the pocket. Slightly a fumble, they are asking for that second, but the second will be never be on. A single has been satisfied with the tally with that satisfaction. Queens can be seen on the card. 22 runs without any loss of wicket, chasing a target of 106, match into the third over. Another equation has been tallying by another 84 runs have been required in the coming 35 balls. 35 balls have been coming towards you, and the runs you have to collapse are 84. Slower delivery, good swing of the bat can be seen. Can ball build up bisector. The ball has been going down into the fences between. On the tally. Thank you, DJ. Yes, 26 runs can be seen, and if 21 Warriors needs to go with a similar kind of momentum, Dhananjay Vas, who is said to be the icon of 21 Warriors, needs to play an inning that he will say that yes, I am going to be a match hero for the 21 Warriors. I am going to take all the situation on my head, and I am going to challenge this 106 run. This is the mindset that has been shown till now from Dhananjay Vas. A little bit of pressure definitely building off of Sushant Thakur after getting that boundary. Now the leg side, just moving on to the offside, it is shuffling across the offside, pulling the ball on down the leg side. Square leg was in business. Kakas can be seen into the action. A good throw can be returned into the hands of the wicketkeeper. The result is a single on the tally. With a single, 27 runs is on the card for the team batting. 21 Warriors, beautiful match. A lot of the spectators are watching the match live on YouTube as well as on this ground. The eyes are focused on Dhananjay Vas as well as Kanhaiya Naik. Till now, the opening has been turning out to be really crucial. They have to continue with the similar kind. On the back foot, backward square cut can be seen. Little bit of punch shot, I will say. The ball has been raised and deeper cover is in business. Just satisfied with a single. And now I will say the time has been come for Kanhaiya Naik as well as Dhananjay Vas to change the shift the gears, because they have been taking the momentum. They have been battling really well. This is third over is in progress. Score is on 28 runs. A challenge has been on 106 is the big mountain. Till now they have just going to 20-30% of it, and they have to collapse the remaining % of that mountain. Big shot attempted. Where was the ball? Where was the bat? A great bounce can be seen. Suddenly ball the pitching onto the good lane. I think the ball was in a fashion to be pulled with a square shot. That is a 12-leg shot or definitely a cross-patted shot. The ball has been slightly taking an extra bounce and beating the batsman. The result is a dot delivery. That is what from Sushant Thakur. Sushant Thakur is getting the confidence after getting that boundary. He is thinking that yes, I will bowl according to my length and line. I will bowl towards my strength. This is the mindset coming from Sushant. Cross-patted shot, not a good idea. Usually the ball has been just pitching off onto the back line of the good land. The ball has been going in as a form of a submarine. The ball has been going into the hands of the wicketkeeper. A dot ball can be seen into the action for Mr. Sushant Thakur. Third over, if you generally have the summary, 7 runs can be seen. First ball, a single. Second ball, a boundary. Third ball, a single. And afterward, a 3 important dot ball from the hand of Sushant Thakur.
Two important dot ball from the hand of Sushant Thakur. 7 runs were given from Sushant. And if you generally see the summary after completion of 3 overs, 28 runs can be seen. That means that another 5 overs, another 30 balls are going to be coming towards you. And the runs you have to collapse are 78. 78 runs required in the coming 30 balls. DJ. Thank you, DJ. It is said that an umbrella cannot stop rain, but it can protect you from rain. Similarly, if you see that confidence cannot guarantee your success, but it can promote you to do the hard work, and that hard work will lead to the success. So let us see who is going to perform that hard work, either the batsman or the bowlers. Till now, the game is turning 50-50 situation. A lot of the spectator will be lying there, and which direction the match has been turning. Rohit Sadelkar has been coming on a screen for the over number 4. Big shot attempted, little bit of slow kind of delivery, missing it completely. And Rohit Sadelkar is been starting with a dot ball. Rohit Sadelkar, if you generally watch a local boy, he has been having a lot of experience about this ground with respect to how the ground will be turning and how the pitch condition will be looking like. Big shot can be seen. Is it big enough? The ball has been going into the deeper sterling, and umpire has been telling that it is going for a human. Thank you, DJ. 6 more runs at Sonatali with that 6. 34 runs can be seen on the card. If you generally have the replay of that shot, beautiful shot. Low full toss has been converted with a cross-patted shot. It is going for tall. The equation was been really good, and that is what the sixer was been coming off. Confidence has been rising up for Mr. Kanaya with respect to that 6. 34. Shot of land down the leg side, missed it completely. We are waiting for the signal. The signal has been determined as a white ball. Roll number 22 comes into the action. Another single in the form of extras. The score has been going to 35 runs. A beautiful match. This is turning out to be the match is turning. The heat over here. A lot of spectators watching this match. And everyone has been thinking that in which direction the match has been turning. Let us find out as the match continues. Cross-batted shot, the ball has been going down, deeper square leg, in the end, the catch has been taken off, Krishna has been... And result, we can see that wicket number 1, Kanaya Naik is coming back into the dugout, DJ. Thank you, DJ. After dismissal of Kanaya Naik, he batted really well with respect to 15 runs from his bat with a courtesy of a sixer and a boundary. 15 of an individual in 10 balls for Kanaya Naik. In order to take the place of Kanaya, we have a batsman coming on, that is Narendra Harmalkar. And we will be thinking that yes, this match is crucial match for us. And I have been taken as a good player in my side. I have been auctioned for my performance. And I need to make that full monty of that performance of mine. I have a mindset that the match is been going. Still 3 deliveries left in this. Let us find out as the match continues. Narendra Harmalkar with a challenge over here. And the equation has been turning on 71 required in the coming 27 deliveries. Down the legal side, a glance can be seen just battling with that. The ball has been raised down. And soon the fielder that is all the way from the deeper wicket. Ram Navikar comes just a fumble. Because of that fumble, a couple of runs have been definitely added. And with that couple, the score has been now moving to 37 runs on the board. Chasing a target of 106. The match going between R7 Tigers and 21 Warriors. Main over, that is power play over. A lot of batsmen are watching for that over. Big shot attempted, but not that much from the middle of the bat. Ball has been raised down into the hand of the deep wicket fielder. Just a single. We'll be minded on the telly with that single.
The score has been moving to 38 runs. Fourth over is in progress in the hand of Rohit Sadilkar. The best one on screen is Dhananjay Vast and Narendra Harmalkar. And we see some big shots over there. A lot of credits will be going on for that shots from Dhananjay. Let us see. Can he produce out? Big shot attempted. Fielder is missing on that occasion. The ball is going into the top corner zone. Right? Thank you, DJ. 6 more runs at Sonatelli, and with that sixer, the score has been moving to 44. Dhananjay Vast, I was talking about the icon player. The icon player has been shining over here. 4 overs have been ended. 44 runs can be seen on the card. That means that another 24 balls have been coming towards you, and runs you have to collapse are 62. Can the bat of Dhananjay Vast or can the bat of Sachin Nayak, who is yet to come on the card, speaks out to be the strategy for 21 years? Or can the bowling department with the likes of Ram Navekar, Sushant Thakur say that, no, we are going to defend his 106. Let us find out as we are moving to Ashok Sarnaik all the way from Shiroda back into the business. चार षटक समाप्त होत आहेत आणि 4 षटकानंतर धावसंख्या पोहोचली ती 44. अखेर दोन्ही संघांचा जर विचार केला तर प्रथम फलंदाजी करताना 42 धावा झाल्या होत्या आणि पाठलाग करताना 21 वॉरियर्स 44 धावा करतो. म्हणजे दोन्ही संघ अतिशय बरोबरीने या ठिकाणी मैदानात मुकाबला होतोय. फलंदाजी बदल होतोय. सातार फुलचा फटका डीप मिड विकेटला गगनचुंबी षटकार 50 रन इसे. सभी बहुत बहुत धन्यवाद. 4 षटक समाप्त झाले. 4 षटकानंतर पहिला चेंडू आणि धावांचा अर्धशतक धावफलकावर. दुपारच्या सत्रात एक तुरुचीची लढत या मैदानात, या ठिकाणी साई भटवाडी मैदानात HCL अर्बन क्रिकेट लीग आज दुसरा आणि अंतिम दिवस. आणि गोलंदाजी करतो या ठिकाणी तो सुशांत ठाकूर. ऑफ टेम्परचा चेंडू ट्राय करायचा प्रयत्न स्पर्धेत अपील फेटाळतायत. धावफलक बरोबर या ठिकाणी धावसंख्या पोहोचते ती 50 धावा. एक गडी बाद पाठलाग मैदानात होतोय तो या ठिकाणी. एकंदरीत 106 धावांचा. 56 धावा अजून करायच्या आहेत. पुढचा चेंडू बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका खोलवर टप्प्याचा चेंडू लांगॉन बाउंड्रीला डीप लांगॉनला क्षेत्ररक्षक फेक होतोय स्ट्राईक एंडला या ठिकाणी. परंतु फलंदाज मात्र थोडक्यात बचावतोय. 2 धावा या ठिकाणी. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. लांगॉन बाउंड्रीवरनं फेक गोलंदाजाकडे. त्यानंतर गोलंदाजाची फेक होते ती या ठिकाणी विकेट किपरच्या दिशेने. आणि त्या दरम्यान मात्र या ठिकाणी 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होतात. डीप लांगॉनला दिसतोय कोमल त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक. फलंदाजी 29 धावा आणि 29 धावानंतर या ठिकाणी सुशांत ठाकूर जो कर्णधार या ठिकाणी R7 टायगर्स क्रिकेट संघाचा. आणि समोर स्ट्राईकला मात्र फलंदाजी करतोय तो नरेंद्र. वरती चेंडू मिस टाइम फटका थोडासा हवेत त्या ठिकाणी. आणि जोपर्यंत विकेट किपर पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू अडवतोय 1 धाव. या दरम्यान मात्र दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. 8 षटकांचा सामना. अंतिम फेरीत बघूया 2 संघांपैकी कुठला संघ या ठिकाणी धडक मारतो. R7 टायगर्स की दुसऱ्या बाजूला 21 वॉरियर्स. आणि थोडीशी या ठिकाणी मैदानात मात्र वाऱ्याची झुळूक दिसते. स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो या ठिकाणी धनंजय. फुलटॉस चेंडू स्वीप करतो या ठिकाणी. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी. आणि जोपर्यंत चेंडूची परती होते त्या दरम्यान 1 धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज ते पूर्ण करतायत. ओव्हरमध्ये षटकार सुशांत ठाकूर. नॉन स्ट्रायकर यांना धनंजय वस्त. स्ट्राईकला फलंदाजी करतोय तो नरेंद्र हरमलकर. बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतो या ठिकाणी. राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाज सुशांत ठाकूर. विकेट किपर या ठिकाणी सज्ज.
चेंडू संधी होती या ठिकाणी थोडासा फ्लोवरवरच्या टप्प्याचा हा चेंडू या ठिकाणी फलंदाजाला चकवतोय. सांगत होते की 5व्या ओव्हरची 5 ओव्हर का खेळ समाप्त हुआ और 5 ओव्हर के बाद टोटल स्कोर 54 प्लस 1 विकेट. भरपूर प्रेक्षक मॅच बघतायत मैदानात आणि त्या ठिकाणी थोडंसं दुपारच्या सत्रात सामना सुरू असल्यामुळे खूप गरमी जाणवते. आमचे मित्र स्वप्नील परब त्या ठिकाणी म्हणजे मॅच बघतायत. उरले त्या ठिकाणी 18 चेंडू आणि या 18 चेंडूत करायच्या अजूनही 52 धावा. आमच्यासोबत या ठिकाणी कॉम्प्युटर स्कोरर या ठिकाणी जोडले गेले ते रजत किल्लेकर आणि कॅमेरामन आमचे अभिजित हे या ठिकाणी कॅमेरामन साठी आमच्यासोबत डीजे पॉवर प्लेचा इशारा करतायत. पंच कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने 18 चेंडू उरले. पॉवर प्लेचं षटक आता मात्र थोडीशी विमानात की मोठे फटके मारावे लागतील या ठिकाणी 21 वॉरियर्स क्रिकेट संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. चांगली सुरुवात आणि त्यानंतर मात्र हे दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी फटकेबाजी करतायत, परंतु थोडीशी आक्रमक फटकेबाजी करावी लागेल या मॅच मध्ये. फलंदाजीत बदल होतो या ठिकाणी. हरीश 18 चेंडू उरलेत आणि 18 चेंडूत 52 धावा, 17ची सरासरी प्रति षटकार या ठिकाणी. 18 बॉल्स 52 रन्स. हर्ष वांगणकर या ठिकाणी बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकार. समोर फटकेबाज खेळाडू या ठिकाणी धनंजय मस्त हा स्ट्राईकला जो सलामीला आल्यापासून या ठिकाणी आतापर्यंत त्याने 2 चौकार आणि 2 षटकार आपल्या खेळी टोलवलेत आणि बघूया या ठिकाणी एखादी मॅच विनिंग खेळी त्या ठिकाणी या मैदानात तो आपल्या संघासाठी करतोय का. 18 चेंडू आणि 52 धावा, 18 बॉल्स 52 रन्स. चांगला चेंडू क्लीन बॉल यार. दुसरा गडी हा या ठिकाणी तंबूमध्ये परततोय. 26 धावांची खेळी या ठिकाणी फलंदाज धनंजय बस्तची. चौदा चेंडूचा सामना करतोय. 26 धावा, 2 चौकार, 2 षटकार आणि नवीन फलंदाज हा या ठिकाणी मैदानात सज्ज होतोय. रामचंद्र उर्फ सचिन नाईक हा नवीन फलंदाज या ठिकाणी मैदानात सज्ज होतोय. हर्ष वांगणकर पहिल्याच चेंडूवर या ठिकाणी गडी बाद करतोय. जी जमलेली जोडी ती फोडण्यात त्याला यश मिळतंय आणि लोकल स्टार या ठिकाणी रामचंद्र नाईक हा सज्ज होतोय मैदानात. डावखुरा फलंदाज या ठिकाणी स्ट्राईकला हरीश वांगणकर, गोलंदाज पहिल्याच चेंडूवर क्लीन बोल्ड. आखो टप्प्याचा चेंडू, पंचा फटका, एक गगनचुंबी षटकार. पाठी बरोबर 2 टाक पहिल्या चेंडूवर गडी बाद करतोय हरीश वांगणकर. त्यानंतर मात्र एक टोलेजंग षटकार या ठिकाणी डावखुरा फलंदाज सचिनच्या बॅट मधनं निघतोय आणि सामना अखेर चुरशीचा दिसतोय मैदानात. या सामन्यात खूप अवघड दिसतंय काय होतंय मैदानात आणि जर फटकेबाजी अशी चालू राहिली तर ही मॅच शेवटच्या चेंडूपर्यंत.
हर्ष वेंगणकर राईट आर्म राऊंड विकेट. समोर मात्र डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय तो सचिन नाईक. बॅटला लागतो चेंडू पाहिजे बाउंड्रीच्या दिशेने आउटफील्ड अतिशय फास्ट त्या ठिकाणी अगदी बाउंड्री लाईनला उभ्या त्या ठिकाणी प्रसाद क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. ठिकाणी कदाचित ही मॅच शेवटच्या क्षणापर्यंत गेली तर अशा 2 धावा अक्षय विमान खूप महत्त्वाचं ठरू शकतात या मॅच मध्ये. 2 धावा दोन्ही फलंदाजांदरम्यान धावफलक पोहोचतोय तो 62 धावा 2 गडी बाद. फटका चेंडू समोर फटका झेल सुटलाय हातातून. श्याम ठाकूरच्या हातातून चेंडू निसटतोय परंतु कदाचित थोडासा आणखी डोक्यावरनं गेला असता तर या ठिकाणी मिळाल्या असतात 4 धावा. जीवदान मिळतंय या ठिकाणी 1 धाव मिळते या दरम्यान दोन्ही त्या ठिकाणी. आणि नक्की या ठिकाणी एक संधी होती फलंदाजाला बाद करायची. बघूया हे जीवदान R7 टायगर्स क्रिकेट संघाला या मॅच मध्ये महागडं ठरतंय की दुसऱ्या बाजूनं मिळालेल्या जीवदानाचा फायदा घेत या ठिकाणी सचिन हा डावखुरा फलंदाज आपल्या संघाला या ठिकाणी विजय पथावर नेतोय. समोर स्ट्राईकला सज्ज होता येतो. उजव्या हाताने फलंदाजी करता येतो नरेंद्र हरमलकर आणि थोडंसं क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल करतोय त्या ठिकाणी हरीश वेंगणकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर राईट आर्म राऊंड विकेट. एक मनगटी फटका ऑन साइडला. बघूया मिड विकेट बाउंड्रीच्या दिशेला पहिली धाव वेगात. त्यामुळे कोमल तिवरेकर अतिशय वेगात येतोय चेंडूची परती करतोय आणि ज्या ठिकाणी 2 धावा होत्या त्या ठिकाणी मात्र एका धावेवर समाधान मानावं लागते ते या ठिकाणी या दोन्ही फलंदाजाला. षटक क्रमांक 6 त्यानंतर उरतील ते या षटकानंतर 12 चेंडू आणि टोटल रणसंख्या 64 लॉस ऑफ 2 विकेट 64 रन 2 विकेट पर. 42 धावा अजूनही करायच्या आहेत आणि या 42 धावांसाठी 13 चेंडू 13 बॉल्स 42 रन्स. 13 गेंदों में 42 रन 13 बॉल्स 42 रन्स. ओव्हरपिच चेंडू निर्धाव चेंडू या ठिकाणी ऑफ स्टंपला सोडून जातोय. चांगल्या लाईनवर करतोय त्यानंतर षटकार आणि त्यानंतर कमबॅक करतोय. शेवटचा चेंडू निर्धाव टाकतोय. सांगता होते ती 6व्या षटकाची आणि 6 षटकानंतर धावसंख्या मात्र पोहोचते ती बरोबर या ठिकाणी धावफलकावर ती 64 रन. दोन्ही संघांचा थोडा विचार केला तर 6 षटकानंतर R7 टायगर्सचा झाला होत्या 82 धावा. थोडासा मागे दिसतोय 21 वॉरियर्स क्रिकेट संघ हा 64 धावावर. परंतु सरते शेवटी उरलेत फक्त 12 चेंडू आणि 12 चेंडूत करायचे अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 42 धावा 12 बॉल्स 42 रन्स 12 गेंदों में 42 रन. राम नागवेकर अपने बॉलिंग मार्क पर अपने कोटे का दूसरा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं. ये ओवर काफी निर्णायक रहेगा. ये ओवर अगर अच्छा निकालने में सफल रहे राम नागवेकर तो पकड़ मजबूत होगी R7 टाइगर्स की. और 21 वॉरियर्स इस ओवर में 15 रन बनाए तो मैच चला जाएगा. ओवरपेस घेने का शॉट सुंदर शॉट गेंद हाथों से फिसली लंबा बाउंड्री. हातातून चेंडू निसटतोय. उरतात 11 चेंडू आणि या 11 चेंडूत अजूनही सामना जिंकायला करायचे असते. 36 11 बॉल्स 36. क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय. राम नागवेकर सज्ज होतोय. एक जमलेला उलटा लावून फटका बघूया मिड विकेट बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक एकेरी धाव थोडीशी मिसफिल्डिंग. सुशांत ठाकूर बॅकअप करतोय. ज्या ठिकाणी 2 धावा थोडंसं रनिंग बिटवीन विकेट. कदाचित डावखुऱ्या फलंदाजाला या ठिकाणी जास्त सचिन नाईकला कारण वाऱ्याचा वेग या बाजूने येतोय आणि डावखुऱ्या फलंदाजासाठी ही मी म्हणेन की अगदी सुंदर फटकेबाजीसाठी योग्य अशी जागा वाऱ्याची झुळूक पण या ठिकाणी त्याचमुळे कदाचित सचिन नाईकला खूप मोठी संधी असेल. क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय. राम नागवेकर त्या ठिकाणी कल्पक नेतृत्व
अगदी हुशार कर्णधार म्हणून ओळखला जातो तोच राम नागवेकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर डावखुरा फलंदाज ज्याला एक जीवदान मिळालंय, बघूया किती महागडं ठरतंय या मॅच मध्ये R7 टायगर्स क्रिकेट संघासाठी. फटका चुकतो या ठिकाणी, मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, एकेरी धाव, या एकेरी धावेला धावफलक मात्र पोहोचतो येतो. 72 टोटल स्कोर, 72 लॉस ऑफ 2 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस, 9 गेंदों का खेल बाकी और अभी भी चाहिए 34 रन. 9 balls 34 runs, 9 balls 34 runs, 9 चेंडू 34 धावा. एक बार तुझी शॉट कमाल रे. पुढे सरसावतो एक सुंदर फटका, लॉंग बाउंड्रीला, चेंडू सीमा पार, 4 धावांसाठी. एक चौकार आतापर्यंत 24 धावा. चांगला चेंडू या ठिकाणी, आणि या ठिकाणी मात्र आता स्ट्राईक मिळण्यासाठी धावपळ, या ठिकाणी धडपड, फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय तो मैदानात. या ठिकाणी नरेंद्र हरमलकर या ठिकाणी बाद होतोय. 2 षटकार, 1 चौकार, त्याच्या खेळी 24 धावांची खेळी, आणि यानंतर मात्र फक्त अवघ्या 7 चेंडूंचा खेळ हा बाकी या ठिकाणी या मॅच मध्ये. बघूया या ठिकाणी जो प्रयत्न झाला फलंदाज सचिन नाईकचा दांडून या ठिकाणी समोरचा फलंदाज हा बाद होतोय त्याच्यासाठी. आणि या चेंडूवर जर मी म्हणेन की त्याने मोठा फटका मारला तर हा नक्की निर्णय चांगला ठरेल, आणि जर बाद झाला तर मी म्हणेन की हा निर्णय त्याचा खूप आत्मघाती ठरू शकतो. 11 चेंडू 24 धावा, 2 षटकार, 1 चौकार, फलंदाज या ठिकाणी नरेंद्र हरमलकर, आणि सचिनला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज हा मैदानात या ठिकाणी संदेश केतकर हा सज्ज होतोय. राम नागवेकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर आपल्या स्पेनची सांगता करण्यासाठी. राईट आर्म राऊंड विकेट, समोर सचिन नाईक. ओव्हरपिच चेंडू, घराघाती फटका, लॉंगॉनला डीप, लॉंगॉनला चेंडू या ठिकाणी लॉंगॉन सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी. म्हणजे जो समोरील फलंदाजाला बाद केला या ठिकाणी मी म्हणेन तो सचिन नाईकने, तो फायदा ठरतो या ठिकाणी. स्ट्राईक मिळवण्यासाठी धडपड, षटकार बसतोय, आणि 6 चेंडू उरले, आणि 6 चेंडू करायचे 24 धावा. 6 balls 24 runs. खूप अवघड आहे अक्षय, मी म्हणेन अभी भी मुकाबला 50-50 का. 6 गेंदों में 24 रन, 6 balls 24 runs. अक्षय तुझी लावली बरोबर. Six ball 24 runs. Thank you DJ Sabi. 6 balls 24 runs. 6 चेंडू 24 धावा, 6 गेंदों में 24 रन. गोलंदाजीत बदल होतोय, निर्णायक षटक या ठिकाणी सज्ज होतोय गोलंदाज कोमल तिवरेकर, अगदी युवा खेळाडू या ठिकाणी या स्पर्धेत Under-22 चा, आणि एक निर्धारित षटक या ठिकाणी, एक महत्वाचं षटक. गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय तो कोमल तिवरेकर. 6 चेंडू 24 धावा, 6 balls 24 runs. ओव्हरपिच चेंडू, दुसऱ्या फटका झेल उडालाय, आणि मयुरेश या ठिकाणी मात्र दुसऱ्या टप्प्यात या ठिकाणी मात्र गोलंदाज झेल टिकतोय, परंतु एक महत्वाचा या ठिकाणी फलंदाज मात्र चौथा गडी हा या ठिकाणी बाद होतोय. उरले 5 चेंडू फक्त या शेवटच्या षटकातील.
फलंदाज मैदानात जातोय तो रामचंद्र साटेलकर. उरले 5 चेंडू करायच्या 24 धावा. 5 balls 24 runs. 5 गेंदों में 24 रन. लेकिन मैं अभी भी नहीं कह सकता जो कि मैच समाप्त हुआ. क्रिकेट है, आखिरी गेंद पर ये मुकाबला जरूर जारी रहेगा. 5 चेंडू आणि 24 धावा. डावखुरा फलंदाज सचिन नाईक स्ट्राईकला. लेफ्टनचा बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. वाईड बॉलचा इशारा होतोय. या एकंदरीत दुसरा अतिरिक्त या ठिकाणी हा वाईड बॉल. अजून 5 चेंडू बाकी आणि करायच्या 23 धावा. 5 balls 23 runs. 5 गेंदों में 23 रन. 5 चेंडू 23 धावा. कोमल सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. सुंदर फटका. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू जाता येतो सीमा पार. या ठिकाणी चौकारासाठी 4 धावांसाठी. 4-19. मस्त मॅच दुपारच्या सत्रात HCL भटवाडी मैदान. उरले फक्त 4 चेंडू उरलेत. राम नागवेकरच्या एका बाजूला अतिशय चतुरस्थ खेळाडू, हुशार कॅप्टन, अगदी फुल माइंड. आणि या ठिकाणी तो मात्र सांगतोय की या ठिकाणी 4 धावा हरकत नाही निघाला तर, परंतु 70 वाचायला लागेल. आणि ही मॅच मी म्हणेन की आता उरली सुरली अक्षय ही सचिन नाईक डावखुऱ्या फलंदाजासाठी. उरले 4 चेंडू आणि 19 धावा. 4 balls 19 runs. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न बघूया. दुहेरी धावांसाठी प्रयत्न होतोय. 1 धाव या ठिकाणी. दुसऱ्या धावेसाठी मिसफिल्डिंग केशव उर्फ काका. आणि 2 धावा या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. 2 धावांच्या मदतीने 3 चेंडूंचा अजून खेळ बाकी. 3 balls 2 events 17 runs. 3 गेंदों में 17 रन. तो 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने पड़ेंगे. 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने पड़ेंगे अब मात्र मैदान पर. 3 balls 17 runs. 3 चेंडूत 17 धावा. कोमल गोलंदाज सज्ज होतोय. राम नागवेकर मिड विकेट बाउंड्रीला आणि समोर फलंदाज डावखुरा फलंदाज सचिन नाईक. सुंदर चेंडू या ठिकाणी. जमली लगतचा फटका. एकेरी धाव. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. सुंदर फेक, परंतु चेंडू स्टंपला न लागतोय. या दरम्यान दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. उरलेत फक्त शेवटचे 2 चेंडू आणि करायचे 15 धावा. 2 balls 15 रन. 2 गेंदों में 15 रन. राम नागवेकर बिल्कुल अनुभव के साथ जानकारी देते हुए कोमल को अब मात्र एका दूसरा नो बॉल, वाइड बॉल, अगर पीछे निकले गेंद 4 रन बने, वाइड बॉल के साथ तो 5 रन. ये इंतजार. लेकिन 21 वॉरियर्स को भी दाद देनी पड़ेगी. बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने इस मैच में. अंडर 22 के खिलाड़ी कोमल बहुत ही अनुभव के साथ. और राम नागवेकर के अगर छत्र छाया में अगर आ गए तो बिल्कुल अनुभव के साथ सीखते जाएंगे. लोअर फुल टॉस गेंद खेला. गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर सिंगल. दूसरे के लिए निकले और जब तक थ्रो पहुंचता थोड़ा सा ओवर थ्रो जरूर हुआ, लेकिन 2 रन लेने से नहीं उठ पाए दोनों बल्लेबाज. तो लास्ट बॉल टू गो. बिल्कुल काफी अनुभव इस बार इस मैच में काम आ गए. R7 टाइगर्स क्रिकेट टीम को फील्डिंग कहां पर लगानी है, गेंदबाजी किस तरह से करनी पड़ेगी. और मेरे ख्याल से सचिन नाईक को मौका था लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए ज्यादा इस ओवर में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की कोमल ने. बार बड़ा शॉट, लेकिन देरी हो गई. मिड विकेट के ऊपर से गेंद 6 रन के साथ जो कि सीमा रेखा से बाहर. और इसी के साथ ये मैच समाप्त होता हुआ 99 रन पर पहुंची. तो मैच हाथों से छूटा. बस एक शॉट की कमी हो गई. अगर एक शॉट लगता तो ये मैच 21 वॉरियर्स जो कि मैदान पर जीत लेती. एक शॉट कमी पडलो अक्षय. एक शॉट कमी पडलो. एक शॉट हो. अक्षय मैन ऑफ द मैच.
रन्सान गेली मॅच. पहिले मॅडन काढले बघ, मॅडन 2 बॉल गेले, त्याच्यावर गेम सगळी चेंज झाली. काय सांगता 29 रन. 7 रन आणि 17 रन दिलेले विकेट ना, पण 29 रन एक सूट बरी तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच कैप्टन कप्तान जो की टीम के R7 टाइगर्स के 29 रन बनाए. एक सूझबूझ की बल्लेबाजी, सिंगल डबल के साथ अपने टीम को जो कि सही रास्ते पर खड़ा कर दिया. वो मैन ऑफ द मैच सुशांत ठाकुर इस मैच के. चलिए गजेंद्र के साथ जुड़ जाएंगे इस मैन ऑफ द मैच के लिए. 29 रन गजेंद्र, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, एक सूझबूझ की बल्लेबाजी मैदान पर. 29 रन की सुशांत ठाकुर जो मैन ऑफ द मैच. 21 वॉरियर्स, बड़ा अच्छा मुकाबला रहा. गजेंद्र 6 रन से पीछे हो गई, यानी एक शॉट कम पड़ेगा इतने बड़े टोटल के सामने. और चलिए गजेंद्र के साथ मैन ऑफ द मैच सुशांत ठाकुर. जी बिल्कुल, वो सुबह मेरे साथ बात कर रहे थे कि मेरा फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन सही समय पे अपना फॉर्म दिखाया. 3.25 और सुशांत 3.25 ये मैन ऑफ द मैच. Nilesh Satalkar, the president of Bhatwadi Middle Manda, will give the man of the match trophy to Sushant. I'd like to call upon Sushant, please come and take your man of the match. एक अच्छी पारी सुशांत की. ताली के साथ उनका प्रोत्साहन करें. सुशांत, मैन ऑफ द मैच ऑफ द सेकंड क्वालिफायर. सुशांत दोन उतरा. सकाळी जिनाडावर घेतलं होतं फॉर्म भरलं आणि सरांचा किती चितून गेलो. सिक्स मारले इम्पॉर्टंट टाइम माझ्या खेळ. आता तुम्ही का फायनल फायनली तुमचं किती प्लॅन असा, आता तुम्ही डिसाईड केला फायनली किती करता. फायनली प्लॅन असो कितें ना, फक्त प्लेयराक धाकटा गेम एन्जॉय करा, आपलो परफॉर्मन्स द्या. तुझो फ्रेंड खूप हॅपी असतलो सूरज. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द बेस्ट फॉर द फायनल. 3:15 is the reporting time for the final, and 3:30 will start the final of Harmal Cricket League 2021. Sai Ducks versus R7 Tigers will collide versus Sai Ducks. Hitesh Gadekar versus Ram Nagwekar. Both the captains are in the readiness. Both the players, we are going to see the talent of Ram Nagwekar and Hitesh Gadekar. It will be a big competition. So see you at 3:30. Thank you very much.